हेलो गाइस, आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं एमबीए इन बेनेट का। तो हमारे साथ है असनिया। ये हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि अभी ये फर्स्ट ईयर में है, तो इन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया है ये वो हमारे साथ शेयर करेंगी। तो कंटिन्यू। हेलो एवरीवन। एज आपने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन कर रखा है, तो फर्स्ट ईयर हूँ मैं एमबीए के। एंड आई स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दैट व्हेन आई वाज न्यू हियर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बैचलर्स करके थी एंड आई वाज अ वेरी uh, free minded and I love to explore and I was very much excited कि हाँ मैं बहुत पार्टी करूंगी और मैं बहुत you know हर चीज का एक्सप्लोर करूंगी, सब करूंगी। बट देन व्हेन आई केम हियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे वर लाइक ओके, दिस इज योर एमबीए एंड आप इसके आगे सिर्फ करियर है एंड यू आर सपोज टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, अब तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है मेरे लिए। But anyway, it was, I would say that it was still fun because when we came here, they told us that over for like 15 to 20 days, we had an induction program. जिसमें they trained us and to build the team spirit. So उसमें in that we ओके। had very fun activities. They told us to build a self standing structure out of bamboos that they provided as a team. So, there was a competition. We were divided into three teams and we were supposed to make that structure. And the structure, सबसे लंबे time तक, और I'll say that, we were made to ask, yeah, exactly, that is it. So, इस तरह का competition was done. And then, काफी मतलब कि, we got to know our classmates and we got very familiar with each other. Plus, we had some weird types of races that they made us do, be ground में. And at first I was like, क्या करा रहे? Why are they making us do this? Like हम MBA में are we supposed to study and stuff? But then eventually समझ आया कि it's like ये team building का वो है, and they are making us get to know each other well. So that was a good experience that I had. Plus, MBA, we are not taught theoretical stuff here. For us, it's mostly very practical. अच्छा। So they make us do, they are like, I can say these group discussions and, panel discussions and presentations and a lot of other stuff. We have a lot of workshops going on for us. So, it's never theoretical. सही है, वो काफ़ी सही है। बट लाइक मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जो सोच के आए थे कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टार्टिंग में मतलब Yeah. कि ऐसा-ऐसा होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी बेनेट, या फिर उससे अच्छी है या फिर उससे बुरी है? कैसा आपको I लगा? I wouldn't say it was good or I wouldn't say it was bad. It was, you know, sweet and salty for me, you can say. That अच्छा। some expectations as a Bennett, अगर आप एक normal college की तरह, if you look at it, I हुँ, would हुँ। say that it is good. I like the infrastructure and I like the environment here. It is good. But हुँ, then हुँ। sometimes, but then, it's salty in the sense there's a lot of pressure and a lot of workload. And we have so many assignments coming up one after another, and then it's like it gets very stressful for us. ओह! Yeah. अच्छा, तो आप Yep. अच्छा अब ये तो ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ टीचर्स के बारे में, तो आपका Yeah. मतलब क्या ओपिनियन, लाइक आर द टीचर्स वर्थ द कॉलेज फीस? I'll say some of them really are. There are exceptions, but then some of them are really very amazing. ओके, So they are तो like very हुँ, helpful. हुँ, And हुँ। once I had a talk with someone, he was in bachelor's, and they asked me about the, who is teaching you, and we told the names, and they were like, "You got the best one." यहाँ पे. ओह! अच्छा, So I'll say faculty MBA के हिसाब से is pretty good. ठीक है। तो आप अगर मैं आपको बोलूँगा अगर रेट करो 5 में से, तो आप कितना रेट करोगे? I'll rate 4. अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और अब इन जनरल एमबीए में मतलब लाइक कॉलेज लाइफ कैसी है? लाइक हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, क्या वर्क मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? मतलब वर्क तो इन द सेंस वर्क नहीं बोलूँगा, बट कॉलेज लाइफ और ऐसे जनरल Yeah, लाइफ बैलेंस। I'll be honest, I sometimes get really jealous of, people doing BBA and stuff because I look at them and I feel like they're living their full lives to the fullest, actually.
because हम लोग फ्री कई बार 6 बजे तक होता है. So we sometimes have class at 8:30 and then हम लोग की छुट्टी होती है around 5:30 or something, and sometimes 9:30 and then till 5:30 we have classes continuously, and for us one lecture is of 2 hours mostly. अच्छा. So it gets very exhausting and tiring. So yeah, so work life, I'll say ke if you compare it with bachelor's, obviously it's very hectic because for obvious reasons that you have career ahead in front of you. So you have to make yourself, corporate ready. बिल्कुल. So that's why it is a bit stressful, and yeah. अच्छा, ठीक है, ये सब तो सही है. और मैं जैसे जनरल इससे पहले मैं एक चीज़ और पूछना मतलब ये लाइक इसमें जैसे मैं पर्सनली बीटेक का हूँ, यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ, तो मेरा तो इधर प्लेसमेंट्स का रहता है, तो आप लोग का भी प्लेसमेंट्स का कुछ आपको अंदाज़ा है लाइक कैसा रहता है? इसमें Placements, मैं सच बताऊँ तो MBA के लिए I'm not that happy with it. Because अच्छा. मैंने अपने सीनियर्स को देखा and you know बीटेक का is better than MBA. हाँ, बीटेक का तो Much काफ़ी सही है better. और इनफैक्ट अभी तो और भी अच्छा हो रहा है, मतलब Yeah. अभी तो सही हाँ. But hopefully it is I think it is predicted or like it is said that हमारे time पे by the time we will be graduating and by the time we'll be completing our course, we'll be getting some good companies and good packages. ओके, मतलब So योर we are बैच. hoping for the best. ओके. Yeah. अच्छी बात है। और अच्छा तो अगर अभी अगर कोई अभी फ्रेशर आ रहा है, तो आप उसको रिकमेंड करोगे कि एमबीए करे वो बेनेट से या आप उसे कोई और कॉलेज रिकमेंड करोगे? Okay. So I'll say two conditions. हुँ, So हुँ। एक में तो I'll say कि अगर if you are like if you've given CAT key exams and other good exams like SNAP and stuff, so I'll say go to those universities, ठीक because है, I am also a graduate from Symbiosis, like I have done undergraduation from there. So ओके। obviously मुझे थोड़ा सा difference feel होता है once I came here, studies में भी and even the environment and everything. तो वो डिफरेंस कैसा मतलब अच्छे वे में या थोड़े बुरे वे में? I'll say कुछ एस्पेक्ट्स में, नॉट एवरीथिंग बट समटाइम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू वन एग्जांपल कि अभी आई होप यू रिमेंबर कि जब यहाँ पे फेस्ट चल रहा था, समथिंग वाज गोइंग ऑन, तो दे रैंडमली स्टॉप्ड एवरीवन फ्रॉम लीविंग द कैंपस. हाँ, हाँ, हाँ। So that was very frustrating for me because पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए for such stuff. So हुँ, in these aspects, sometimes I think that this place is lacking where it can improve. Other than that, studies में ठीक है. ओके, Yeah. ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो मतलब वही वही मतलब वही क्वेश्चन पे वापस आते थे कि आप रे जैसे अगर कैट वाला हो गया, उन कॉलेज में मिल रहा है तो ठीक है, वरना इस कॉलेज में ले सकते हैं मतलब लाइक Yeah, एज़ अ because ऑप्शन। I'll be on. Yeah, it is a good option because you won't regret it over here. You won't feel कि यहाँ पे studies are not good, or you won't feel कि यार मैं time बर्बाद कर रहा हूँ and stuff, because ठीक है। you do learn stuff here and you do get some value here. So that is good. Like for example, we had a workshop recently. It was design thinking. So ओके। I'll say that उसमें they didn't just teach us practical knowledge, but that guy who came to teach us, हुँ, he हुँ। even taught us about like empathy and like designing a product by understanding someone, by imagining yourself in their shoes. So हुँ। he didn't just teach us some very practical knowledge. He even involved emotions and feelings in a very different way of learning. So these things are different and they are very refreshing. ठीक है, तो Hmm. सही है फिर तो मतलब मेन तो हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर ही लिए। अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप बता दो कि लाइक अगर कोई जॉइन कर रहा है अभी बेनेट को एमबीए के लिए, तो अगर आप उसे कुछ टिप देना चाहते हो एक छोटा-सा या फिर कोई भी एक छोटी-सी चीज़ या और कुछ आप ऐड करना चाहते हो इसमें, तो आप वो मेरी एक ही टिप रहेगी कि when you're just coming here for the first time, like even I was first for the first time मैंने अपना घर छोड़ के I came to a very different place, a very different environment. हुँ, Even हुँ। though मैंने ट्रांसफर काफी किया है, पर this was the first time जब मैं घर से अलग थी. So you need to be at least for like I'll say थोड़ा सा ना, you need to socialize a lot initially, talk to everyone, जो भी हो, जितने भी लोग मिल रहे हैं, and be accepting of others differences.
because this is something I find it lacking over here, that people are not Okay. that accepting, and there's sometimes politics also among students. Hmm. So I feel like you should have the spirit ke, we should progress together. Hmm. कि किसी का बुरा करके you are just trying to ruin someone's career and then just making yourself look better, that is something that you should not be doing, because in the end, when you go in this kind of corporate world or go somewhere, you need to work in a team. So having a competitive spirit is good, but you should know how to work with everyone and understand everyone and accept everyone. So I'll just suggest that. Exactly. Exactly. That's Yes. 100% true. Yeah. Okay. So this was it. Yep. So thank you, Asnia, Thank for this you. amazing podcast. Thank you everyone for listening. Meet you guys in the next one. Bye bye.